समर वेकेशन का मतलब है आज़ादी। आज़ादी मतलब ट्रैवलिंग। तो टिकट बुक कराओ, सामान पैक करो, इक्विपमेंट्स डालो बैग में और निकल पड़ो। लेकिन अगर हमेशा तुम ही ट्रैवल करोगे तो तुम्हारा दोस्त कैसे ट्रैवल लॉग बनाएगा? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीन्स कुछ ऐसे हैं। All the way from Florida, yo. मुझे रात में बोला गया कि 6 बजे आप उठ जाए ना, 6:30 बजे हमें निकलना है ट्रेन पकड़ने के लिए। मैं 6:50 पे घर के बाहर खड़ा हुआ था शीश के साथ, ये नहा रहे थे, इनको मेकअप करना था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और ट्रेन का टाइम जो हमारा मैंने कमरा भी साफ किया, मैंने बैग भी पैक किए, मैं सबको उठाया भी, और ये इसमें नहाने में जो आधा घंटा लगाया। मैं लिटरली 10 मिनट लगाया पूरा टाइम। टाइम तो लगता है ना। सारे तो बहुत नॉटी हो गए हो। सब गंदी बातें करते हैं। तो हमारा टारगेट था कि हम यहाँ 9:30 से पहले पहुँच जाएंगे और फिर हम 9:30 की ट्रेन लेके ग्रैंड सेंट्रल जाएंगे न्यूयॉर्क। लेकिन हम यहाँ पहुँचे 9:27 पे। गाड़ी पार्क करते करते सामान निकालते ट्रेन चली गई। लिटरली हम साथ चल रहे थे और हमारे साथ साथ ट्रेन भी चल रही थी और चली गई। तो अब हमें यहाँ पे आधे घंटे गुजारने और फिर दूसरी ट्रेन मिलेगी। सो मज़ा तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन आएगा मज़ा, उम्मीद तो है कि आएगा। I'm so happy. Here we go again. Damn, Daniel's back at it again. पूरे दिन ख्वार होने के बाद थोड़ा सा अच्छा टाइम मिला और अभी हम जो हैं वो सेंट्रल पार्क में बोटिंग करते हुए एक सुकून के कोने पे आराम फरमा रहे हैं। शेड भी यहाँ पे धूप से थोड़ा दूर है, शुक्र है। तो थोड़ी देर यहीं रुकेंगे।
7.